Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video we are going to start the new subject which is called as C programming language. So in this session we will understand the C programming, feature of the C programming, the history and how we can install the C programming language in our computer. तो इस सेशन में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्या फीचर्स हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से टर्बो या फिर सी को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ इसे हम जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जनरल पर्पस बोलने का कारण ये है कि आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन बिजनेस साइंटिफिक रीज़न से संबंधित ही आप बना सकते हैं बोल के ऐसा नहीं है। आप हर किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाना हो या फिर आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप सी लैंग्वेज के ज़रिए बना सकते हैं। तो उस कारण से हम बोलते हैं कि सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So C is a high level programming language which is structured programming language and it is used to develop both system software as well as application software. So both the software can be developed using this C programming language. Coming to the history, when we talk about the history of the C language is the offspring of BCPL language, which is most oftenly called B language, and this B language was developed in 1960s period at Cambridge University. So BCPL stands for Basic Combined Programming Language, and B is the one of the language which was developed in the 1960s period, which is named as B language. B language was modified by Dennis Ritchie during the 1970s period, and it was that modified language of the B was implemented at Bell Laboratory in 1972. So therefore 1972 is the birth of the new language which is named as C language, but it was used in research laboratory till 1978. In 1978 the C commercial version was released, and C is very flexible and versatile and allowing the maximum control with minimal commands, because we have only 32 keywords, so therefore we say that minimal commands are there and it allows the maximum control over the language. Okay, and C was originally first implemented on the DEC and PDP-11 computers. C की जहाँ तक बात की जाए तो C लैंग्वेज B लैंग्वेज से आया है बोल के हम बोलते हैं, और B लैंग्वेज BCPL से आया है। BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके तर्ज के ऊपर B लैंग्वेज 1960 में बनाया गया केन थॉमसन के द्वारा। उसके बाद जो है उसी B लैंग्वेज का इस्तेमाल डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरी में किया और 1972 में C लैंग्वेज को बनाया। उसके बाद इसका कमर्शियल वर्जन 1978 में ब्रेन कर्निहान नामक व्यक्ति के एक सहायता से डेनिस रिची ने उसको मार्केट में 1978 में उतारा। ये पहली बार जब इसको बनाया गया 70s के पीरियड में, चाहे वो बेल लैबोरेटरी में इस्तेमाल करना हो, उसके बाद कमर्शियल वर्जन का इस्तेमाल हो, तो उस ज़माने के कंप्यूटर्स के ऊपर किया गया। उसीलिए कहते हैं कि पहली बार जब सी बनाया गया तो इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन DEC और PDP-11 कंप्यूटर्स के ऊपर हुआ है, और कम से कम कीवर्ड होने के वजह से इसमें हम आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटाइलिटी आसानी से प्रोग्राम में हम कर सकते हैं, और बहुत सारा नियंत्रण हम इस एक लैंग्वेज के ऊपर और इसके प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर पा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ
32 कीवर्ड सी है, 32 कीवर्ड ही इस एक सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हिस्ट्री, यानी कैसे सी बना, सी नाम कैसे आया, BCPL का जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है सी, क्योंकि बी का इस्तेमाल ऑलरेडी केन थॉमसन ने 1960s में किया था, तो उस कारण से अगला जो अल्फ़ाबेट था BCPL में वो था सी। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी देखेंगे, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, बी का इस्तेमाल हो चुका था, उस कारण से इस नए लैंग्वेज को सी बोल के नाम दिया गया। और इसके जो जनक है वो डेनिस रिची है। बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। अगर से सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शंस वगैरह ये सपोर्ट करता है, हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है, और रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस है जिसके वजह से रिच लाइब्रेरी भी बोलते हैं। एक्सटेंसिबल इसलिए है क्योंकि एक ओपन फॉर अपग्रेड्स के लिए अवेलेबल होता है, और एक्सटेंसिबल भी है, उस वजह से भी हम एक्सटेंसिबल बोलते हैं। रिकर्शन फीचर भी है। रिकर्शन फीचर इसलिए है क्योंकि बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी बैक ट्रैकिंग फंक्शंस लिख सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन लिखने के बाद वो फंक्शन खुद अपने आप को बुलाता है, जिसे हम रिकर्सिव फंक्शंस बोलते हैं। मल्टीपल टाइम्स क्या है, फंक्शन अपने आप को बुला सकता है, तो उसे रिकर्शन बोलते हैं। तो वो फीचर भी अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। पॉइंटर भी हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं मेमोरी को हम इन एक पॉइंटर्स के ज़रिए। फास्टर इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम मिनिमल नंबर ऑफ लाइब्रेरीज बोलते हैं, और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बहुत कम होने के वजह से क्या है, बहुत तेज़ी से इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का काम हम कर सकते हैं। तो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का जो समय है वो कम लेता है, तो ये एक फ़ायदा है। तो ओवरहेड्स भी बहुत कम होंगे, उस वजह से फास्टर बोल के मतलब बहुत तेज़ गति से ये काम करता है, ये भी एक उसका फीचर है। अगला जो आखिर का फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट बोल के। मेमोरी मैनेजमेंट में ये होता है कि इसके पास एक मेमोरी मैनेजमेंट क्लास के फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैलॉक, कैलॉक, रिकॉल, रिलॉक, फ्री जैसे फंक्शंस है जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करना हो, डी एलोकेट करना हो, री एलोकेट करना हो या फ्री करना हो, ये सारे काम हम कर सकते हैं। उस वजह से ये मेमोरी मैनेजमेंट भी इसका फीचर है। So when we talk about the features of the C programming language, we have high level language because C provides a strong abstraction in case of its libraries and built-in features that make it machine independent. It is capable enough to develop the system applications such as kernel, driver, etc. Second feature is the structured language. C language supports structured programming, which includes the use of functions. Functions reduce the code complexity and are totally reusable. So hence it is a structured language. The third feature is the rich library. So it has a rich set of libraries. Unlike its predecessors, C language incorporates the multiple built-in arithmetics and logical functions, along with many built-in libraries, which makes the developer faster and convenient. And the fourth feature is extensible. C language is a high-level language and is also open for upgrades. Hence, this programming language is considered to be extensible like any other high-level languages.
Fifth feature is the recursion. So in the C programming language, it supports the function backtracking, which involves the recursion. In the process of recursion, a function is called within another function for a multiple number of times. So therefore it is called recursion. So this recursion function is also there in the C programming language, and it supports that backtracking function. Hence the fifth feature is the recursion function, and sixth is the pointer. C programming language which enables the user to directly interact with the memory using the pointers. We use the pointers in a memory, structure functions, arrays, stacks, and many more. So therefore this is also one of the features. The pointer is one of the feature because we can directly interact with the memory by using this pointer. The seventh one is the faster. Why we say the faster? Because it has less libraries and built-in functions, which makes the compiler and execution time to be less, and the system faces very low overheads. So therefore it compiles fast and run the programs fastly. So therefore a faster is also one of the feature of the C language. And the last but not the least is the memory management, because C provides the best in class memory management. It can both allocate and deallocate the memories dynamically, right? So C language allocates and deallocates the memory dynamically. The malloc, calloc, realloc, these are the some of the functions are used to allocate the memories dynamically, and also there is a free function is used to deallocate the used memory at any instance of time. So therefore these all are the features of the C programming language. Now let us come to the installation of C in Windows operating system. So how we can install a C in Windows operating system, in any Windows operating system? So first of all, go to Google, open the Google, and there you can type Turbo C compiler, Windows 8, Windows 10, whatever the Windows version you are having in your system. So type in the Google, hit the first link, then you will be getting this developerinsider.co website. So there you can find the download Turbo C++. Click the download Turbo C++. So downloading window gets appear. Just scroll it down. It is taking few seconds. Okay, already downloaded. So downloading has started. So now you can see at the bottom, downloading in progress. So once the downloading gets complete, you can open in the folder, or directly you can click on the installed file. So it will open in your window. It is getting downloading right now. So download is not yet completed. Okay, so once the downloading is completed, you can click, you can see at the bottom there is Turbo C++. I have clicked it, so it will get installed. Once it finished, you can open directly. You can close the existing file by clicking here, and then click on the file, select the new, so new file gets opened. So here you can type the program. Okay. Okay, so before coming to this basic structure of C program, let me show you. This is the online compiler which I am using right now. So
for example, say if you type this simple program, so you can just click on run, so you will be getting hello world. So whatever you write here, right, so you will be getting on your screen hello world, right? Or you want to make any other message to be printed, say hello everyone, welcome to C programming world. Just simply click on run, so you will be getting this kind of output. Okay, so this is just an example, right? Once your downloading gets completed, you can go to new and you can have the new file. There you can type this code. So let me give you the details about how a basic structure works in the C programming language. What are all the different sections we are having in the basic structure of C programs. एक बार आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप फाइल में न्यू फाइल चूज करेंगे तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगा जहां पे आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। मगर बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है जानना आप किसी भी प्रोग्राम को टाइप करने से पहले, क्योंकि किस सेक्शन में किस स्टेटमेंट को डालना है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम बोल के बोलते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो स्ट्रक्चर होता है। आज बिना स्ट्रक्चर को जाने हुए, बिना बिल्डिंग ब्लॉक्स को जाने हुए हम किसी भी प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं। A C program can be viewed as a group of building blocks which is called as functions. A function is a subroutine that may include one or more statements designed to perform a specific task. To write a C program, we first create a function and then put them together. A C program may contain one or more functions. We can say functions, okay, or solutions. This is the basic structure of a C program, and in this basic structure you can find there are 6 sections in the C programming language. A first section is the documentation section, second is a link section, third is a definition, fourth is a global declaration, fifth is a main function section. In main function section there are 2 parts, declaration and executable part, and both these parts are included within the curly braces. You can find the 2 curly braces. This is the opening curly brace and this is the closing curly brace. So within these 2 curly braces, the 2 parts will be there in the main function section, declaration and executable. And thereafter the last or the 6th section is the subprogram section or function declaration section. So there you can find function 1, 2, 3, dash, dash, dash function, and n number of functions can be declared. Okay, so this is the basic structure of a C program. तो ये एक basic structure है जिसमें कुल मिला के 6 sections होंगे। हर section का अपना ही एक काम होता है। जैसे कि comment line लिखना है आपको, if you want to write a comment line, you can write it in the documentation section. You want to declare some of the library functions, include files, those can be written in the लिंक सेक्शन। जो भी आपको लाइब्रेरी फंक्शंस लिखना है लिंक सेक्शन में लिखेंगे। डेफिनेशन सेक्शंस में हम लोग क्या है, डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे। ग्लोबल डिक्लेरेशंस में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस करना है तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस कर सकते हैं, जिनका उपयोग मेन फंक्शन और फंक्शन 1, 2, 3 कहीं पे भी कर सकते हैं। 5वां जो सेक्शन है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन यानी कि आपका एक्चुअल प्रोग्राम लिखा जाएगा और जिसमें 2 पार्ट्स होंगे और हर एक मेन फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस होता है, जो कि बोल सकते हैं कि एक प्रकार से डोर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर ऑफ द प्रोग्राम। मेन फंक्शन सेक्शन हैज़ ओपनिंग कर्ली ब्रेस, that means the beginning of the program. Closing curly brace indicates the end of the program, and it has 2 parts. Similarly, we have subprogram section, which is called as functions section or function declaration section.
let us understand one by one. As I said, documentation section is used to write the comment lines. Okay, if I go back to the program, so here you can find at the first line you can see double slash is there, online C compiler to run C program. So this is the comment line which I have written here. Okay, similarly write a C code here. So these are the two comment lines which I have written, and this comment line can be written anywhere in the program. कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. डबल स्लैश इसलिए दिया है क्योंकि CPP का कंपाइलर है, तो CPP में डबल स्लैश इस्तेमाल होता है. अगर से डॉट सी से आपका फाइल आपने सेव किया है तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ओके, इनको हम नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स बोलते हैं. ओके, सो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है लिंक सेक्शन. द सेकेंड सेक्शन इज द लिंक सेक्शन एंड इट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक द फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी. यानी कि जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे सिस्टम में होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में होते हैं, जो इनबिल्ट होते हैं, उनको कॉल करने के लिए लिंक सेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं. यानी कि हैश इंक्लूड जैसे फाइल्स को हम मेंशन करते हैं. जैसे यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h बोल के जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने लिखा है लिंक सेक्शन में. यानी कि पहला जो लाइन है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का पार्ट है, दूसरा जो लाइन है वो है लिंक सेक्शन का पार्ट. इसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा या तीसरा जो सेक्शन आएगा उसे हम डेफिनीशन सेक्शन बोलते हैं. राइट, डेफिनीशन सेक्शन. तो डेफिनीशन सेक्शंस में हम लोग जो भी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स है उनको डिक्लेयर करते हैं. और उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है. यानी कि आप मेन प्रोग्राम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब प्रोग्राम्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. पांचवा जो सेक्शन है वो है मेन फंक्शन सेक्शन बोल के. तो मेन फंक्शन सेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है उसको सबसे पहले मेन प्रोग्राम सेक्शंस में यानी कि हमारे मेन प्रोग्राम में लिखते हैं. और मेन प्रोग्राम में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोल के. जैसे कि यहाँ पे मेन बोल के हैं, तो ये मेन शुरू कहाँ पे हो रहा है, इस एक करली ब्रेस से, ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग करली ब्रेस से. ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आते हैं वो दो पार्ट होते हैं. यहाँ पे एक्चुअली मैंने डिक्लेरेशन पार्ट नहीं लिया, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिया है. डिक्लेरेशन पार्ट यानी कि कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है. See, the declaration part declares all the variable used in the executable part. यानी कि जो भी executable part में इस्तेमाल करना है, जिन वेरिएबल में वैल्यू डाल के उनको आपको एग्जीक्यूट करना है, वैल्यू कंपाइल करना है, उनका डिक्लेरेशन पार्ट में होता है. यानी कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करके उसका इस्तेमाल बाद में होगा, पहले इस्तेमाल करके आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो कंपाइलर को बताने के लिए कि मैं ए या बी या एक्स नाम का या वाई नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनमें वैल्यू स्टोर करूँगा और उनको मैं कंप्यूट भी करूँगा यानी कैलकुलेट भी करूँगा, और उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है मैं किसी और वेरिएबल यानी कि सम में हो या जेड वेरिएबल में हो मैं स्टोर करूँगा. तो वो बताने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट में उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है. उसके बाद जो कंपाइलेशन है, जो डिस्प्ले करना है, जो वैल्यू को एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हो या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, ये सब कुछ हम क्या है हमारे एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कर सकते हैं. तो मेन प्रोग्राम के बाद सब प्रोग्राम या फंक्शंस सेक्शंस बोल के आएगा. तो ये सब प्रोग्राम सेक्शन जो होता है, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, जिस फंक्शंस को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है. राइट, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है. तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं जनरली क्या है, ये मेन फंक्शन के कोड को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए रीयूजेबल
कोड को राइट करने के लिए यानी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द फंक्शंस इज टू lower the complexity and provide the more reusability of the code. So for example, say this is the simple program I have written, right? So already this simple program we have seen in this online compiler execution. So there we have run this program and we got this result. So here in this program, in this simple C program, if you see, I have mentioned this hash include stdio.h. This is the library function std. This is standard. I stand for input, O stand for output, dot h is a header file. This is the header file which supports all input output statements. तो आगे आने वाले क्लास में हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. अभी फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ बोल के है, हेलो वर्ल्ड बोल के हमने लिखा हुआ है. तो प्रिंट एफ मेरा क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस के बीच में लिखा हुआ है. ठीक है. सो मेन लिखा हुआ है, मेन के साथ कोई सेमीकॉलन एसोसिएट नहीं करेगा, मगर बाकी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं आपको सेमीकॉलन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रूल ये बोलता है एवरी स्टेटमेंट्स एंड्स विद द सेमी कॉलन. यानी हर एक स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे सी प्रोग्राम में, तो हर एक स्टेटमेंट एंड होगा सेमी कॉलन से. और आउटपुट में हेलो वर्ल्ड बोल के आया, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है. न्यू लाइन कैरेक्टर यानी मेरे कर्सर को नेक्स्ट लाइन को लेके जाने के लिए मैंने स्लैश एन लिखा हुआ है. Similarly, I have one more simple program. There I am adding the two numbers. So here I am defining the three variables int. So this is the declaration part where I am declaring some of the variables, say I, j, k. Three variables are declared as int type. So int is an integer data type, and thereafter I am assigning the value, say 6 to I, 8 to j, and thereafter I plus j. So whatever the computed value is there, after assigning the value, I am just adding both the 6 and 8 together. So because in I have 6, in j I have 8. So 6 plus 8, that is 14. 14 will store in k variable because there is a assignment operator. This equals to is called as assignment operator. So 14 value will store in k variable. Then using this printf, I am printing the string sum of two numbers is. So it will print as usual sum of two numbers is, and this percentage is nothing but this is the conversion character of k variable. In k variable I have 14, and that 14 is displayed by this percentage d. So percent d is a conversion character which display 14 value. So this way I can print, and thereafter when this closing curly brace encounters, it means it is the end of the program. Our programs get stopped. One more simple program is given. So this is about the area of circle. So where I have declared radius and the area are the two variables declared as float. So it can take the pointing value also. Then radius, we need to enter the radius. So scanf will accept that value. So this %f is again conversion character for the float data type. Whatever the value we enter or we input, that value will store in radius variable, and thereafter I am using the formula pi r square, pi value into radius into radius. So whatever the area of circle value is generated by this formula pi r square, it will store in area variable, and that area variable is printed through the printf statement. So you can see radius question mark. So I can input 5, then I can get 78.53975 as a value. So this is all about
the C programming language and the history and the features and how you can install the C programming language. I hope you understood this first session. We will come with the second session. Thank you for watching.